shocking news. An IED blast has taken place in that same area in Rajouri, where just about a few hours ago people were shot dead by terrorists who checked the Aadhaar card of the victims, ensured they were the Hindu families, and then they were targeted. 4 civilians lost their life. Innocent families being targeted in Jammu's Rajouri now. And while that was happening, an improvised explosive device, an IED, there was a blast in the village. An army jawan is rushing the injured people to the nearby hospitals. We are being told, as we can see, it looks like there's one woman. There's information coming in that a woman and a child has been injured. Our reporters are on the ground. Kamaljeet Sandhu is in Dhangri. This is the Dhangri village in Rajouri, nearby the same area. And an absolute horror, remember, for a peaceful resident community in the border village in Rajouri. Just a few kilometers from Rajouri is the Pakistan border, barely about 5 to 10 kilometers. This is the Dhangri village in Rajouri, which is in the Jammu division. Kamaljeet Sandhu is there on location. I'll quickly try and get in a word from there. IED blast at the Rajouri's Dhangri village, where just about a few hours ago, there were 4 civilians shot dead, many injured after women and children were pushed into a room. Aadhaar card was checked of the victims. Let's listen in to Kamaljeet Sandhu. छोटे बच्चे थे और कुछ महिलाएं थी. हम उनसे बातचीत कर रहे थे कि कल की घटना के बारे में बताइए. तो तकरीबन 12 घंटे के बाद यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है. तो ऐसा माना जा सकता है, हो सकता है ये टाइमर हो या फिर कोई रिमोट फिटेड हो. ये सब एक अटकलें लगाई जा रही हैं. लेकिन उसके बाद सारी सेना है वो हरकत में आ गई, पुलिस हरकत में आ गई. अब देख सकते हैं जिस तरह से अब गश्त लगाई जा रही है और ऊपर ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि शायद कोई और बच्चा फंसा हो सकता है. क्योंकि जब हम बात कर रहे थे, आपको बता दें, वहां जो विक्टिम है उसका नाम दीपक है, जो कि कल फायरिंग में मारा गया था. अगर हम आप बात करें यहाँ पर तो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आपको जो कैमरा पर्सन है उसे रोक दिया गया है, लेकिन मीडिया को आगे जाने दिया जा रहा है. और हम सीधा आगे चलते हुए आपको दिखा रहे हैं, वो वाला घर है और अचानक से एक बहुत जबरदस्त धमाका हुआ और उसके बाद हमने देखा कि कई लोग घायल हो गए. 2 महिलाएं थी, उनके पैरों से खून निकल रहा था. और साथ में अगर हम बात करें, यहाँ पे लगातार मीडिया को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम यहाँ पे आपको सेंसिटिवली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर ये घर है और यहाँ पे जब धमाका हुआ तो बहुत सारा धुआं निकला और चीखने चिल्लाने की आवाज आई. और वहां पे सुरक्षा के कुछ लोग, सुरक्षा बल के कुछ लोग खड़े हुए थे और उनको अचानक वहां से नीचे लेके आया जाए. लेकिन आपको बता दें, उस वक्त भी अफरा तफरी का माहौल था. यहाँ के ये जो 3 घर हैं उन्हें टारगेट बनाया गया और जाहिर सी बात है मीडिया वालों ने इस पहाड़ी के नीचे कवर लिया. और आपको बता दें, यहाँ पर इस वक्त जिस तरह से माहौल है, चेकिंग की कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा डिवाइस ना रह जाए. देख सकते हैं आप. और एक और घायल को ले जाया जा रहा है इस वक्त. ये जो घायल है, जल्दी क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, जख्मी बहुत हुए हैं. एक बच्चा क्यों नहीं ढूंढा? बच्चे मर गए. रात से क्या ढूंढ रहे हैं? ब्लास्ट हुआ यहाँ पे. ब्लास्ट हुआ उसके बाद अभी तबीयत डेथ हो गई है. अभी अभी 2 लोगों की डेथ हो गई है. अभी 2 लोगों की. देखिए, जिस घर पे हम खड़े थे आपको वो विजुअल दिखाने की कोशिश करते हैं कि 2 महिलाएं जिनसे हम बात कर रहे थे, अब गांव वालों का मानना है कि उनकी डेथ हो गई है. और जाहिर सी बात है ये वो घर है और यहाँ पर जिस तरह से अफड़ा तफड़ी का माहौल है, कोशिश करते हैं बात करने की. क्या हुआ, क्या हो गया है? मैं अभी आया हूँ. लोगों के अंदर और मजीद अब आक्रोश नजर आ रहा है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर सर्च किया गया था तो ब्लास्ट कैसे हो गया. जाहिर सी बात है आक्रोश जो है वो नजर आ रहा है. और गांव वालों का ये कहना है कि जो आर्मी से पूछो, आर्मी क्या कर रही है? एसपी पुलिस और आर्मी रात की घूम रही है.
किया था? क्या कर रही है आर्मी? ये फिक्स किया होगा कि कल माता में लोग आएंगे और यहाँ एक बच्चा है, एक कोई छोटी बच्ची है। देखिए, ये पुलिस की कंफर्मेशन नहीं है, ऑफिशियल कंफर्मेशन हमने कुछ देखा है कि कम से कम अब 4 से 5 घायलों को ले जाया गया है और यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे और जाहिर सी बात है इस वक्त आक्रोश का माहौल है और उसी वजह से लोग काफी उत्तेजित है जिन्होंने कुछ खोया है और जाहिर सी बात है एक बड़ा सदमा क्योंकि 4 मृतक हो चुके हैं। यहाँ पर जिस तरह से गोलीबारी हुई, एक खून की होली खेली गई, उस वजह से लोगों का कहना है कि सुरक्षा के मामले पे सरकार क्या कर रही है, सुरक्षा बल क्या कर रहे हैं। और इस वक्त भी क्योंकि ये माहौल अब कह सकते हैं कि जो एरिया है, इलाका है, वो सैनिटाइज नहीं है, अब भी ऊपर जाके चेकिंग करने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है ये एरिया एक तरह से अनसेफ है क्योंकि ये एक घर था और पहला घर था जहां पे आतंकी गए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने आईईडी पीछे छोड़ा है जो कि बाद में फट गया जिससे काफी धुआं निकला और जाहिर सी बात है घायल भी हुए। हमें जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई, हम वहां से नीचे आके दूसरे घर में जा रहे थे। जब ये विस्फोट हुआ तो जाहिर सी बात है जिस तरह का धमाका हुआ, जिस तरह की इंजरीज हुई है, एक लाइव आईडी आतंकी पीछे छोड़ गए हैं। यानी इस वक्त भी जो माहौल है वो असमंजस का है, अनसर्टेनिटी है और सुरक्षा की मांग की जा रही है। लेकिन जो लोग हैं आप देख सकते हैं कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है काफी आक्रोश है उनमें। Jeet Sandhu reporting live. This, remember, is a very scary situation right now because just about 12 hours ago, there were people, innocent civilians, whose Aadhaar cards were checked by terrorists who barged into a house. After their Hindu identity was verified, they were shot dead. And now there is an IED blast while our reporters were also on the ground trying to interact with the witnesses. If you can hear me, Kamaljeet, I totally understand the anger of the innocent bystanders, people. Remember, these are local residents where suddenly 12 hours later, there is another blast that takes place. Injured are being rushed by the army jawans because there was already forces deployed in that area. Look closely from the geography. I will try and help you understand what this location is. Rajouri is a border town area. It was even interior into that, a village, Dhangri village, and this is surrounded by forests. Few kilometers from here is the Pakistan border. So this is the border area and it is surrounded by forests. So these terrorists had come from the forest areas into the houses with the village where they knew was predominantly a Hindu-dominated village, and we checked the identities and then shot the innocent civilians dead. And this now, while the search operation is currently on, this shows, remember, that while the terrorists have gone back and there is another blast that has taken place. It's an improvised explosive device, as it appears, which means it can be remote controlled as well. The local residents are angry. They're asking what kind of operation was on. Sunil Ji Bhatt is also on the phone line with me. Sunil, this is the border village and clearly the panic must be understandable. We are reporting as sensitively as possible, but if an IED blast takes place in that same area, it's bound to raise concerns for the local residents. Absolutely, Pooja. This clearly shows that the area is, still unsafe and it needs to be properly sanitized. And that's what the security forces have been doing since late last night. They have been sanitizing this entire area because in the previous terror attacks also in Jammu and Kashmir, there have been incidents where terrorists have left IEDs, grenades, and later on these explosives explode. And that is why even after, anti-terror operations are over, the security forces, take some time. They carry out the combing operation. They carry out the proper sanitization of that area, and only then, when they are sure that this area is safe, then the normal movement is allowed. But since this is this is an area which is surrounded by dense forests and huge mountains, so it's आज भी आप आके बात करिएगा कि क्या आप इनको जो पूछो, जो अभी आईडी ब्लास्ट हुई है, रात को इतनी फोर्स आई है, फोर्स को पूछो आपने चेकिंग क्यों किया, कहाँ पे ब्लास्टिंग हुई नहीं हुई है इधर, रात को कोई चेकिंग नहीं हुई है, पूरा एरिया इन्होंने बस ऐसे ही बैठे रहे हैं सारे। आपको ये भी बता दें, आपको इनके ये क्वेश्चन उनसे करो ना, पुलिस वालों से ये क्वेश्चन करो। समझी चाल है कि सुबह लोग इकट्ठे होंगे यहाँ पे और यहाँ पे ब्लास्ट किया जाएगा और यहाँ पे जगह जगह कैजुअलिटी